Hello, friends, hyperachievers, hyperperformers. How many of you would be interested to know the formula of your winning success? How much percentage depends on you, and how much percentage it depends on your team or the other people? So, अगेन इन हिंदी कि आप पे कितना प्रतिशत आपका सक्सेस आज के दिन में जो आप अचीव करना चाहते हैं वो परसेंटेज में डिपेंड करता है और कितना प्रतिशत ये दूसरों पे या आपकी टीम पे या पे डिपेंड करता है और क्या वाकई में इसका कोई फॉर्मूला है. सी आई एम टॉकिंग टू पीपल हु वांट टू प्ले बिग. ए व्हेन अंडरस्टैंड दिस कि जब हम छोटा खेलते हैं व्हेन वी आर प्लेइंग स्मॉल इट इज एन इंडिविजुअल गेम एंड सर्टेनली इट इज मैनेजेबल. लेकिन अगर आपको आपके अभी के काम में लग रहा है कि ये मैं अकेले नहीं कर सकता हूं, certainly you are looking for big goals, big game, big targets, and I really want to congratulate you that this is the way to really have big goals. But let me tell you, this is, if it is not individual game, this, like the team playing together, is a challenge. How many of you agree that yes, it is a challenge? See, you will find talent all over the market. That person is that talented that you met somebody in a meeting, in a session, in a group, and you were so impressed by the person. But let me give you a caution. That word, people, you will find not making anybody wrong. बोलने वाले, अच्छे बोलने वाले आपको इतने लोग मिलेंगे. Sweet talkers, and nothing wrong about it. It is always a good idea to talk sweetly, to talk nicely. लेकिन यहाँ पे मेरा ये कहना है कि talking and just good talking and just making promises and just being in the head is 7%. 90% सक्सेस जो आती है वो एक्शन से आती है और हमको एक्शन टेकर्स चाहिए और ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है. सो यू नीड टू रियली स्ट्रेस मोर ऑन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी एंड इंटेग्रिटी और इसको ग्रूम करना पड़ता है क्योंकि 100 में से, जैसे सी आई हैड बीन इनटू रिक्रूटमेंट सिंस लॉन्ग, डूइंग रिक्रूटमेंट in HDFC long years back. And I've seen gradually in my own business, like recruiting the maids, driver, other staff, teachers, coordinator, principal. अब जो मैं देख रही हूँ द सिनेरियो, द व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, 100 में से एक ही आपका रिक्रूटमेंट सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट होगा जो कि आपके विजन या आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन होगा. So ongoing recruitment is the key, and ongoing transformational training is the key. आपको अपने साथ वाले लोगों की मेंटल हेल्थ एंड द मेंटल एक्सपेंशन पे काम करना पड़ेगा. नो चॉइस एट ऑल. सो हियर आई वुड लव टू टेल यू, अब आ गया है ये समय आपको ये जानने का कि आप पे आपका अगर बिग गोल, इफ यू आर एमिंग फॉर बिग गोल्स, एंड आई एम रियली टॉकिंग ओनली टू द हाइपर अचीवर्स एंड हाइपर परफॉर्मर्स, क्योंकि ये यही कैटेगरी है जो मेरी बात को अभी समझेगी और उनको ये एक्सपीरियंस हो रहा होगा. अगर आप इजी गेम खेल रहे हैं, दिस इज नॉट रेलिवेंट, आप अकेले ही कर लेंगे सारी चीजें. सो 10% it is on you, your result, and 90% it is on your team, which is like my fingers, which you are seeing here, all are unequal and all are unique and all are so different. Can you see? Yes. So we need to really work on the wheel balancing alignment of our team, the servicing again and again, creating the team, and of course bringing the team to one vision, one goal, one direction and one focus. और ये सब ह्यूमन बीइंग का डिजाइन नहीं है. ह्यूमन बीइंग्स, everybody is very different, the thought process is different, and everybody comes with very different, like
like the not only the thinking but the way to perceive things, to see things. परसेप्शन फिल्टर कह लीजिए, वो देखने का चश्मा जो है सबका अलग होता है, और ये सब प्रोग्राम्ड है और इस पे काम किया जा सकता है. So I'm talking about productivity, क्योंकि जब आप बड़े goals लेते हैं, you have to be really on top, being, like understanding what the process, what is good going on, and what is there where you need to really, upgrade and update. Again, I'm repeating, काम सिर्फ 4 दिन ही करना है, मंडे टू थर्सडे करना है. फ्राइडे का दिन, जो कल का दिन आ रहा है, इसको रिव्यू के लिए रखना है. क्या चीज सही हुई, मेजर काम बस यही करना है, क्या सही हुआ क्या नहीं हुआ, और इस पे काम करना है. इट इज लाइक राइटिंग एंड देन वर्किंग ऑन इट. सैटरडे संडे आपके पास 2 दिन आएंगे. बिलीव मी, मैं 7 दिन काम करती थी, 24 घंटा करती थी, बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं और बहुत अच्छा, लाइक व्हेन आई लुक बैक आई एम हैप्पी, फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड. बट प्रेशर के साथ आए हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज के साथ आए. वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था. मुझे ये ट्रेनिंग मिली मेरे बॉसेस से, और इंश्योरेंस बीइंग वेरी एग्रेसिव, और जब खुद का बिजनेस स्मार्ट नेटिव्स इंटरनेशनल, तो मुझे ये था कि भाई आपको कोई चॉइस नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा, और आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा अपनी टीम से. This was a wrong programming I had and a learning I had from few of the people who were very successful. आज का टाइम देखिए बदल गया है. इट इज ऑल अबाउट लाइक कोलैबोरेटिंग. लेकिन आप हर किसी से कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं? आई हैव सो मेनी पीपल रियली बीइंग देयर, बट आई अंडरस्टैंड मुझे मेरी वैल्यूज से जो मैच कर रहा है उसी से मेरा सक्सेस होगा और उसका भी सक्सेस होगा. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग ही दैट रियली दिस इज अ वेरी सेंसिटिव and a very like important critical thinking perspective. And the team really matters, क्योंकि आपके 10 अगर हाथ होंगे तो आप कितना काम कर पाएंगे? If you have 10 hands, how much you are able to work? Just imagine that. Just imagine your actions or imagine your productivity. और एक दिमाग जब उन 10 को गाइड या उसको अलाइन करेगा, so the possibility is there that clashes will not be there. And there are ways to create human beings. So the formula I want to give you is communication. आप टीम को कैसे अलाइन करेंगे? कम्युनिकेशन से करेंगे. Do you see some people you feel that they love you, they understand you, they listen to you? ये कैसे होता है? आपको एक्सपीरियंस होता है उनके कम्युनिकेशन में. आप जो कम्युनिकेट करते हैं वो सुनते हैं, और वो जो कम्युनिकेट करते हैं वो आप उसको समझ पाते हैं, और आपको लगता है कि लाइक यू रिलेट टू इट. इट्स कम्युनिकेशन. सेकेंड थिंग इज इंटेग्रिटी. मैं मेरा शब्द हूं. I am at a stage of life I cannot experiment. To give you my past experience and my very close experience, being this digital world very new to me, I had all fraction of experiences of digital marketers and the social media people, and I loved the people I worked with, but certainly the consistency, the integrity, and the fire, the energy could not match. And of course, now when I see earlier I used to feel, oh इसमें इतना पैसा देना है, ये करना है, इसको ऐसे को हायर करना है. बट नाउ आई सी कि मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है जो इंटेग्रिटी है, कमिटमेंट वाले हैं, उनको ही यहाँ पर थोड़ा सा like they can be groomed and grilled and skilled, and they can be again like this, क्योंकि उन्होंने 10-10 साल काम किया है मेरे साथ, उन्होंने इतने साल काम किया है मेरे साथ, तो ट्रस्ट इश्यू है. So can you see this in your business also? You miss on people. I would love to give an example. Somebody came to me, a very educated person, and he just joined my team at a very low level, a 4th class level. And then I saw the person, just being very responsible, and just my energy and integrity and the zeal to learn was there in the person. And today he is handling one of my business. I have 4 businesses. One I'm not doing so aggressively, but 3 I'm doing
parallelly on a daily basis. So one is the training one, and one is my own construction, like the passive income stream which I've created, another passive income stream because I coach on money also. So even I have to work, and just recently, last 2 years, I've started this. And yes, it is it is really going well by touch wood. Yes, money is grown on trees, I can tell you. And for this, you need to come to my session also to understand and experience this more. अभी आपको लगे ये क्या बोल रहे हैं, मनी तो हार्ड वर्क से आता है, मनी तो बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. तो मेरे लिए भी वाकई में दिस वाज लाइक अ न्यूज, बट रियली आई वर्कड ऑन इट एंड विद द बेस्ट पीपल, एंड आई एम क्वाइट हेवीली सेल्फ इन्वेस्टेड, if you will see, heavily invested. So the team also gets the benefit of it. और अभी लाइफ पे आने का मोटिव ये है कि जिन लोगों को इस प्रोडक्टिविटी, टाइम, मनी और सीखना है, करना है, आप आपको जरूर इंटरनली यू नीड टू डू दिस मास्टर्स, दिस एडवांस थिंग ऑफ गोइंग थ्रू जो भी मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ. सो कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन और इंटेग्रिटी की मैं मेरा शब्द हूँ. एंड दिस इज ऑल साइंटिफिक. आई विल प्रूव. आई कैन नॉट डू दिस जस्ट in talking. For this I require more time. You have to come to a master class also, and it is an invitation for you to see. And last, the foremost important thing which I want to assert here is making everything a team play, a game. I will repeat: making everything a team play, a game. Most of the people, they sulk, the team sulks, they go into, when there is no energy. हर चीज को गेम बनाना है, मजेदारी होनी चाहिए, तभी तभी आप करोगे उसको, तभी टीम करेगी. और हर चीज, जिस किसी चीज में चेक इट चेक इट चेक इट, आपको बोर्डम फील होता है, आपको प्रेशर फील होता है. स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू मी. अगर आपको एग्जाम, अगर प्रेशर हो रहा है, आपको इसको गेम बनाना है, आपको इसको प्ले बनाना है. और स्टूडेंट्स, आपके उसमें कॉल होगा. देखो, एक प्रोडक्टिविटी कोच आपके साथ हेल्प कर सकता है, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपकी हेल्प कर सकता है. दिस आई एम टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, राइट? और आपके टीचर्स हैं, और आपने कुछ कम्युनिटीज जो ज्वाइन कर रखी होंगी, करेक्ट? सो जस्ट लुक अपॉन. इवन आई, एवरी टाइम आई इंश्योर आई हैव वन पर्सनल कोच. आई एम इन्वेस्टेड इन अ पर्सनल कोच. आपका है कोई पर्सनल कोच? I have a health coach also. And very soon, once my money comes, I'm very sure I would be hiring, and this is a live, a team of 11 people who will manage my money. And I have the names also. The 6 of the names are already decided. They are there with me. I have to choose another 5. देखिए, ये जो गेम है, ये सुपरफिशियल पे, ये कॉन्शियस ब्रेन थिंकिंग पे आपके लाइफ के रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं. कोई भी रिजल्ट, मनी, हेल्थ एंड योर वेल्थ एंड योर वर्क, नो, दिस विल नॉट वर्क. आप कर ही तो रहे हो, अब तक कर रहे हो, और अभी तक आप मेरे को सुन रहे हो, इसका मतलब यू आर रिलेटिंग टू दिस. रिजल्ट कैसे आएंगे? जब आपके अंदर से सबकॉन्शियस इसके लिए अलाइन होगा. यहां पे मैं बताना चाहती हूँ टुडे, हाउ द सबकॉन्शियस प्लेज रोल. सो टुडे आई हैड माय ड्राइविंग क्लास वाज देयर टुडे. सो लाइक यू टर्न कैसे करना है, और राउंड अबाउट में, लाइक इफ आई हैव टू गो लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट तो कैसे जाना है, स्ट्रेट जाना है तो कैसे जाना है, राइट जाना है तो कैसे जाना है, एंड हाउ टू स्टॉप द कार, and U-turn I already told you, and then parking, like the 60 degrees, and then the reverse parking, parallel parking. Got it? इतना heavy load हो गया दिमाग पे. I came back at 10:40 a.m. and it was like a lot of mental exercises. And of course, when you are driving on the road, it is like really, you are so active and you are so consciously doing it. I felt, I need to relax. मैंने कहा, let me just relax. And do you know, I felt asleep. And I just want to share on this live that it is so, I think it was good that I slept. And it was like my subconscious processing that 2-3 hours
of working. And do you know, the subconscious requires, a break and a fresh processing also. जब आप 2-3 घंटे बहुत सारा काम कर लेते, डेटा कर लेते, तो आपको थोड़ा सा ब्रेक की जरूरत है उसमें। प्रोसेस भी तो करना पड़ेगा ना, ये कंप्यूटर प्रोसेस ही नहीं करेगा तो वो फिर सुपरफिशियल रह जाएगा, और ज्यादातर यही होता है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो काम हो, इसलिए रिजल्ट्स नहीं आते। check it check it, don't follow me but check it. So then when I was asleep today, I had a dream at 11 a.m. might be, or 11:30 a.m. because I slept for 1 or 2 hours. Then I got up. So what the dream was कि मेरा एक पैर एक्सेलेटर पे, the right one, or the car is out of control and the car is in its speed, and there is a lady sitting next to me left with a seat belt and having a small baby. So I was so afraid that something should not happen to this next to the person who is sitting next to me. And I was just thinking, like, how do I control, how do I stop the car? It is all happening in my dream. Suddenly, like, it came, what I did in my dream was the left leg I had put on the brake, and the car slowed down and then stopped. And then I could see that now, very nicely, I took the car to the institute and I drove and I parked there, all happening in the dream. And I saw that I was given a paper in my dream that I passed the exam. And friends, today it is 9th of November. I have not given the exam. Tomorrow is my last driving class, and just in 3-4 days I will be giving the exam. But can you see, what I am getting present is my subconscious from inside is ready. Passing the exam, it has come as a message to me, yes, you can do it, you will do it. While I was like overwhelmed, रेस्टलेस, कि इतना सब कैसे याद होगा, कि मिरर को देखो, फिर सिग्नल दो, फिर वो साइड मिरर देखना है, फिर शोल्डर करना है, then again I have to see the mirror, and then I have to change the lane. Can you get it? So ending this live, this is the last live of today's week. It is just look for people, create people in your communication for commitment and consistency. नहीं तो मत खेलो ये गेम, कितना भी टैलेंटेड व्यक्ति है, विश्वास करो मेरा, और एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस करके देखो इसको जो मैं बोल रही हूँ. सेकेंडली, चूज फॉर पीपल हु विल ऑनर द वर्ड, क्योंकि ये 100 में से एक ही व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे. और तीसरा, हर चीज को गेम बनाना है, प्ले बनाना है. Did you like this stuff? If you like this, I have a lot of surprises for you. I would be certainly giving something in the description. Don't miss it, because seriously, I'm working on time and productivity. I work only 4 days, and 5th day is a lot of like the review, and or the next 3 is creative and a processing day for the next week, and 1 day chill out. Sometimes the chill out happens, but it is there in the structure. And of course, then it is the planning. And of course, I'm proud of my team. I'm so proud of the people who are there in my team. I have very less people, but I am so proud of them, because we all are growing together, and I see a happy future, and a lot of well-being, prosperity, and abundance, which we are able to share with people also. So thank you, everybody. Keep prospering, and I will see you on Monday, same time. Thank you.